My top 3 AI tools which I use every day, almost every day as a software engineer, and these tools knowingly or unknowingly helping me to become better and earn more. So I will teach you everything, okay, what I use and how I use, so that you can understand better, and eventually you'll get to know how these all things are helping me to earn more. Okay, so बहुत interesting होने वाला है, to the point रखूंगा, and बहुत simple है. अगर आप ओपन माइंड से इसे देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आई एम एबल टू बिल्ड मोर, हाउ आई एम एबल टू लर्न more in a very short time, and how I am able to earn more. Okay, so let's start with my personal favorite, which is GitHub Copilot. So on my screen you must be seeing that ये एक एडिटर है IntelliJ, जहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने एक GitHub Copilot खोल रखा है, and if you see here it has a option called agent. Okay, and if you just click on this you will see our different models which you can use. ठीक है, my favorite is Cloud Opus 4.8 if I am doing something really important. Otherwise I can go for Codex or Sonnet, anything. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, generally let's say if you are working on a code base for the very first time, ठीक है, ये repository मान लो मैंने एक team join करी है and I don't know anything about it, so I can simply give it a prompt that help me understand this code base. ठीक है, and this will scan the whole code base and give me a brief idea about what this code base does. अभी अगर AI नहीं होता, ये टूल नहीं होता, अदर ऑल्टरनेटिव्स है जो हम पहले यूज करते थे ओल्ड फैशनड, तो उसमें हम क्या करते थे, लिटरली कोड रेपो जाके एक एक क्लास, एक एक फोल्डर स्ट्रक्चर्स ऐसे खोल खोल के देखेंगे, राइट, एंड इफ देयर इज एनी डॉक्यूमेंटेशन ऑन कॉन्फ्रेंस, अगर वो पढ़ा हुआ है तो वो पढ़ेंगे, एंड ट्रस्ट मी इफ यू आर एक्सपीरियंस रीडिंग कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट्स और एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग and what not. अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे I have the response, right? It just took a few seconds. Now it says absolutely I'll give you a practical map of the repo so you can navigate it with confidence. ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ आइडेंटिफाई करा है, दिस इज अ Kotlin HTTP 4K. देखो यहाँ पे मुझे कुछ डिपेंडेंसी वगैरह देखना नहीं पड़ रहा है, ये बता रहा है कि ये कोड बेस Kotlin में है, HTTP 4K बेसिकली वेब फ्रेमवर्क यूज करा गया है, एंड what it does, the core purpose is described in readme. Okay, readme मैं पढ़ सकता हूँ उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक एप्लीकेशन KT फाइल है, बैनर्स रिलेटेड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रिपोजिटरी है तो मैं इतना ब्रीफली नहीं बताऊंगा, बट इट सिंपली इंटीग्रेशंस क्या है वो भी दिखा रहे हैं, टेस्टिंग है, एंड यू कैन रीड थ्रू इट, एंड दिस विल हार्डली टेक 5 minutes एंड यू विल हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस रिपोजिटरी कि ये क्या करता है, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, व्हाट ऑल फीचर्स, व्हाट ऑल इंटीग्रेशंस, व्हाट ऑल सिस्टम्स यू आर कनेक्टिंग विद दिस रिपोजिटरी, राइट, all those things you will be able to know within a few minutes, right? How cool is that? Not just this is something which is like information based, right? This can also write code for you. So मान लो if I just open a random class, let's say this one, right? So this looks quite simple. Let me open any service. ये कोई API class है, right? And this is a very long class, see? ठीक है? And I'm not happy. It's not, मान लो कि I want to refactor this huge class. Okay, now this agent will help you refactor this class without you doing anything manually. Okay, might be you might be giving suggestions, ठीक है, उसमें से कुछ questions वगैरह हुए थे, what you want and all. So if you see refactor order बता रहा है ये, that pure file split only, ये पहले सिंपली स्प्लिट करेगा फाइल, विच इज लाइक कोई भी मैनुअली अच्छा सीनियर डेवलपर करेगा तो दे विल बी डूइंग द फर्स्ट थिंग दैट स्प्लिट करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा चीज़ों को डिफरेंट फाइल्स में, एंड उसके बाद रन टेस्ट टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज intact, and then eventually it will identify a lot of things, right? Extract private helpers, convert placement builders to strategy objects later, keep API compatibility until, and so on. You have a lot of suggestions, right? And according to this, if you'll interact and if you'll just give a go ahead, why this works well. So if I just say go ahead and do it, अभी मैं बहुत ही vaguely ये prompt लिख रहा हूँ, otherwise I'll try to do it stepwise. Okay, so अभी just I'm trying to show you that if you just ask it to do it, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, it has started. I guess this is from previous commit, so let me just stash it. I'll just show you कि ये खुद से refactor भी कर देगा, right? So this is, अगर आपने use करा है तो you must be knowing it already, but what I'm trying to tell you is using such tools, right, where you have a agent in your day-to-day code editor or IDE, you can build more, you can write code more, you can test better, you can have better documentation and everything. And trust me when I'm saying this, जो काम मैं 1 महीने 2 महीने लगाता हूँ वो 1 वीक में हो जाता है.
ठीक है, ये तो बहुत ही रैंडमली मैंने वो कर दिया, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी फास्ट, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट फाइल्स चेंज होना स्टार्ट हो गया है, राइट, एंड आई कैन जस्ट कीप एक्सेप्टिंग इट एंड इट विल कीप डूइंग इट, ठीक है। मुझे वैसे करना नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू शो यू हाउ इन माय डे टू डे लाइफ आई यूज दिस काइंड ऑफ टूल्स टू speed up my work. Okay, so I'll just stop it. So this is my first favorite. So it could be anything. अभी मैं GitHub Copilot use कर रहा हूँ. You can use Claude, you can use Codex, anything, right? You can have Cursor as an editor, and you can do the same things. So there are different ways to do the same thing. It is just that you can now write code faster, you can review faster, you can produce more quality code, you can refactor more, and whatnot. A lot of things, right? In a way, you can be 10x 20x more productive than before, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो नाउ सोचो, अब मैं ऐसे अगर काम कर रहा हूँ तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में आप अगर ऐसे काम कर पा रहे हो वेयर यू आर डिलीवरिंग मोर, तो कोई भी खुश होगा, राइट? पीपल विल अप्रिशिएट योर वर्क। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। तो ये तो हो गया कि मैं डे टू डे वर्क करता कैसे हूँ। सो ऐसे टूल्स को यूज करके आप अपने चीजों को बहुत प्रोडक्टिवली अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, ज्यादा मात्रा में डिलीवर कर सकते हो, राइट? ये तो हो गया पहला AI टूल, राइट? What is next? Next is, अब मैं डे टू डे चीज़ों को बिल्ड तो कर रहा हूँ, बट बिल्ड करने के साथ साथ ना टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, राइट? एंड टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, आई हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिवली लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट? आई हैव टू बी कीप रीडिंग ब्लॉग्स, आई हैव टू बी कीप वॉचिंग ट्यूटोरियल्स, आई हैव टू बी कीप वॉचिंग कॉन्फ्रेंसेस, टेक कॉन्फ्रेंसेस एंड व्हाट नॉट, राइट? मान लो कि कुछ मुझे अभी क्लॉड में इतने अपग्रेड्स हो रहे हैं, राइट? तो मान लो यूट्यूब पे यूजुअली हम क्या करते हैं, लाइक मान लो अभी देर इज दिस प्रॉब्लम, राइट, वेयर आई कैन से हाउ टू सेव क्लॉड टोकन्स, राइट? सो यहाँ पे देर इज दिस वीडियो, राइट, हाउ टू सेव क्लॉड कोड टोकन यूसेज 5 ways टू। तो अभी सपोज मुझे ये जानना है, और मे बी आई नीड टू वॉच मल्टीपल वीडियोज, राइट? तो इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, what we generally as a user do is we see a lot of videos, conferences videos or tutorial videos, or let's say reading a few vlogs, right? Now imagine how time taking process this is, right? This will take your time for sure, right? This is known, and this is the usual way normal developers doing, right? What I'm doing differently is I use another tool which is called as NoteGPT. So on this tool there is a feature, let's say I just want to watch this video. Recently I come across this channel. If you are not familiar, you can check him out. He is a staff engineer at Meta, or maybe he has left Meta but he was a staff engineer. So यहाँ पे भी same video है, how to save 90% of the Claude token usage. अभी ये 18 minutes का वीडियो है, मैं इसे जाके देख सकता हूँ, but what I'll do instead, I can simply copy this. I will go to my NoteGPT, which is another AI tool, and I will just paste it here, and I will just ask it to summarize. So on the right side it will give me a summary of this. So here it gives a few things. You can simply read the highlights that index entire code base using code graph to enable this and compress. So basically you get the brief of that video, so you don't have to spend 18 minutes. You can simply go through it. It will hardly take 5 minutes. And यहाँ पे there is an interesting thing which I generally do is AI chat. यहाँ पे from that summary, from that video, I can simply ask how is he able to reduce token usage, okay? And I can pinpoint my question. तो अब ये बता रहा है, राइट, क्या कर रहा है? इंडेक्सिंग द कोड बेस, compressing the outputs, using cavemen to shorten the output language, session and model management, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो I can briefly see that. So अभी ये वीडियो छोटा था, मान लो 1 घंटे का 2 घंटे का कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो and you want to learn something very specific. अभी recently I'll give you another example. अभी कुछ दिन पहले मैं I was working on a task where I need to understand more on service mesh, Istio, राइट? एंड बीइंग अ बैकएंड डेवलपर हमें उतना डीपली हमें पता नहीं होता, कंसेप्चुअली पता होता है, बट गिवन दैट टास्क वाज नीड्स टू बी डन एंड इट रिक्वायर्स अ नॉलेज ऑफ इस्तियो, तो मैंने क्या किया, एक वीडियो निकाला जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे का था. अभी देखो सर्विस मेश इज अ ह्यूज थिंग, तो टू मिनिमाइज माई एफर्ट व्हाट आई डिड, आई सिंपली टेक दैट वीडियो का लिंक, आई पुट इट हियर, आई जस्ट क्रिएट अ समरी आउट ऑफ इट, आई रेड ब्रीफली एंड ऑल्सो आई यूज दिस AI chat to find out my queries, what specifically I was looking for, and trust me, I got those much faster than anyone would be able to do it manually, right? So this is another thing which I wanted to present to you, okay? And once you are able to learn things faster, there is the third thing, right?
which will help you to make more money. And this is my top secret. Generally what happens, this is personal favorite, which is ChatGPT. ChatGPT सबको यूज करते हैं, and but I don't know how effectively you are using. I am using it for so many benefits. ठीक है, I'll tell you what I generally do. So now ChatGPT बहुत लोग यूज करते होंगे as a chat bot or a chat where you can do a chat, you can ask questions and so on. But I use it very differently. Okay, so you will notice there is this small icon here or this app Willow Voice. I don't write, I just use my voice to write anything. So let's say I want to learn about service mesh, what is Istio and what are its benefits. So I just have to speak the prompt and it will here and then put it. So अगर आपका prompt बड़ा है and you are using this Willow Voice, this is pretty cool. It's a AI powered tool, but ये एक bonus tool है जो मैं बता दिया. But my focus is ChatGPT right now. ChatGPT, why? Because if you see, ChatGPT has a very cool thing here, which is a start voice, which is a voice mode. Okay, what I generally do, see, to basically earn more. Once you know how to build things, once you know how to learn fast, the final thing is that you want to earn more. And to earn more, what you do, you generally get a promotion in your company or get another job, right? To get another job, you need to know if you are really good, right? And to know that, basically you need practice, and to practice you need someone who can help you. But in this busy world, we know, right, कि कोई available होता नहीं है. तो let's say if you want to do a mock interview, किसके साथ करोगे? मैं तो ChatGPT के साथ करता हूँ. I'll show you a sample. Hey, do you hear me? Loud and clear. What's up? Yeah, so basically I'm preparing for my next interview, back-end interview, and I'm having total of 9 years of experience. Right now I'm preparing Spring Boot. So would you mind asking me a few difficult questions just to prepare? Okay, absolutely. Let's do a mock interview. I'll play the interviewer and I'll start with something tough, but fair for your level. First question. In a Spring Boot REST API under heavy load, requests start slowing down, but CPU is only at 30% and memory looks fine. Walk me through how you debug that step by step. Oh, that's an interesting question. And I think this is very tough for me to answer it right now because I'm creating a video. By the way, I know the answer, right? There could be many things which is happening in the backend. It could be a slow DB query. It could be heavy load on the service where your requests are into wait queue. There could be many more things. I'll discuss it later. But right now I'm in the middle of something, so I'll shut you for now. Thank you so much. Alright, so this is how I practice. And आप इसको बोलोगे ना feedback देने के लिए, तो वो feedback भी देते हैं, आपके answers भी सुनते हैं, and करो ये. This is really cool. So I hope आपको समझ आया होगा how you can build stuff fast, how you can learn fast, and how you can prepare yourself with an AI tool. That's it about this video. I hope आपको अच्छा लगा होगा. I just want to keep this video short and provide as much value as I can. So just अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो बताना, अगर कुछ समझ आ रहा तो कुछ क्वेरी होगा, क्वेश्चंस होगा तो बताना. By the way, on the note, I also help people to get their next job. So if you are new to this channel, you can check out the description. It will have links for my LinkedIn, my Instagram, and you can also browse my YouTube channel where you will find a lot of helpful videos. So मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए keep learning. Bye. See ya.